Now the next question of the maxima minima is, show that the height of the cylinder of greatest volume that can be inscribed in a right circular cone of height h and semi-vertical angle alpha is 1/3 that of the cone, and the greatest volume of the cylinder is equal to this. Now in this question what we have to do, first we have to prove that the volume of the cylinder is greatest, means the double derivative of the volume of the cylinder will be greater than 0. So the double derivative will be greater than 0, and then after that we have to prove that the volume of the cylinder is 4/27 pi h cube tan square alpha, and at last we have to prove that the height of the cylinder is equal to 1/3 the height of the cone, means height of the cylinder OO dash will be equal to h by 3. These three things we have to prove in this question. Now one by one we will do. How? First we will prove that the volume of the cylinder is maximum. When we have to prove that the volume of the cylinder is maximum, in that case the second derivative should be greater than 0. So the volume of the cylinder is pi r square h. So for that what we have done, the height of the cone I have taken as small h, height of the radius of the cylinder is r, and the height of the cylinder is OO dash. ये ले लिया. Now how to find out OO dash? PO minus PO dash. Now OO dash will be equal to, so we have PO, that is h we have already taken. Now PO dash we have to find. तो PO dash निकालने के लिए क्या करेंगे बेटे? We will take this triangle, and this angle is the semi vertical angle that is given to you in the question. Tan is equal to perpendicular upon height. ये देखो, tan theta is equal to perpendicular upon base. ठीक है, tan theta is equal to perpendicular upon base. Now the perpendicular is equal to what? That is the radius of the cylinder, small r we have supposed, PO dash. So what we have done, PO dash is equal to r upon tan alpha, 1 upon tan alpha is equal to cot alpha. तो ये जो सिलेंडर की हाइट निकालनी थी बेटे, that is PO माइनस PO dash. तो इसके लिए मैंने PO dash की वैल्यू निकाली, that is equal to r cot alpha. So h minus r cot alpha. अब ये कहाँ यूज आएगा ना? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच. एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर? ओ ओ डैश. ये रहा आर स्क्वायर, ये रहा एच. एच की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली थी, यहाँ पुट कर दी. नाउ वी हैव मल्टीप्लाइड दिस वैल्यू, ये दोनों के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया. नाउ देयर आर टू वेरिएबल आर स्क्वायर एंड एच. नो नीड टू वरी अबाउट द एच. एच के बारे में कुछ सोचना ही नहीं. क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, और जो चीज़ गिवन होती है दैट इज कॉन्स्टेंट. वी विल कंसिडर दैट वैल्यू एज एन कॉन्स्टेंट. तो ये तो कॉन्स्टेंट हो गया. कॉट अल्फा भी आपको दिया हुआ है, ये भी कॉन्स्टेंट हो गया. सिर्फ क्या वेरिएबल बचा? दैट इज आर. वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर. सो dv over dr, pi I have written as such. The derivative of r square is equal to 2r into h minus 3 pi, this will be 3 pi r square into cot alpha. Now by the second derivative test what we have to do, first derivative को 0 के इक्वल, मतलब this value is equal to 0, इसको इक्वल टू के उस साइड ले गए. पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया, तो स्मॉल r is equal to 2h upon 3 cot alpha. This cot alpha I can write the tan alpha. This is the critical value I have got. Now I will derivate this first derivative. We will find out the second derivative. 2 pi, the derivative of r will be equal to 1h, 2 pi h minus 3 2s are 6 pi r cot alpha. Now we have already got the value of r, that is 2h upon 3 tan alpha. यहाँ रख दिया बेटे. cot alpha and tan alpha will be cancelled. क्यों? cot alpha को 1 upon tan alpha लिख सकते, काट दिया. इसको सिंप्लीफाई किया तो this is negative, and we know that if the double derivative is negative so the volume is maximum. वॉल्यूम हमारा क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया. अब हमें ये भी प्रूव करना था. पहले तो हमने ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का काम कर लिया. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू दिस मच. तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या था? पाई आर स्क्वायर एच. ये रहा था बेटे. तो पाई आर की जगह जो वैल्यू आपने निकाली है यहाँ भी पुट करो, यहाँ भी पुट करो. नाउ दिस विल बी 4h स्क्वायर अपॉन 9. दिस इज tan स्क्वायर अल्फा. h माइनस सी कॉट अल्फा tan अल्फा अगेन कैंसिल्ड.
3h minus 2h, that will be equal to h upon 3, that is 4 pi upon 27 h cube tan square alpha. So this is the volume of the cylinder. We have got greatest volume, we have proved, the volume of the cylinder we have calculated. Now one more thing is left. The height of the cylinder is 1/3 the height of the cone. So height of the cylinder is equal to what? OO dash. This is OO dash. So we will find out OO dash is equal to h minus the value of the r you substitute here, 2h upon 3 tan alpha into cot alpha. Tan alpha and cot alpha cancel. This will be 3h minus 2h upon 3. So OO dash will be equal to h upon 3. It means the height of the cylinder is 1/3 the height of the cone. Three things we have to prove in this question and we have proved it. First, the volume of the cylinder should be maximum. See, we have calculated the first derivative, r की वैल्यू निकाल ली. सेकेंड डेरिवेटिव निकाला, नेगेटिव आ रहा है, वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया. सेकेंड बोला था फाइंड आउट द वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम के फॉर्मूले में इसमें r की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, जो इन्होंने बोला हमने प्रूव कर लिया. थर्ड इन्होंने बोला द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 द हाइट ऑफ द कोन. सो हाइट ऑफ द सिलेंडर इज OO डैश. तो उसकी जगह पे r की जगह यहाँ भी वैल्यू सब्सटीट्यूट की एंड वी फाइंड दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 द हाइट ऑफ द कोन.